Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve the numerical related to the issue of share, forfeiture and ratio. So we are going to deal all the three things together. We are not going to solve individually with the issue of shares, forfeiture and reissues, as we have already learned in our session that about the theoretical thing, about the journal entry, disclosure and everything. Okay. सो आज के सेशन में हम कवर अप करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉरफीचर एंड री इशू का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। हम फुल फ्लेज क्वेश्चन ही करेंगे अपने एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इंडिविजुअली हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन जनरल एंट्रीज को डिटेल में कवर अप किया है, तो आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहां से करके आएंगे, ठीक है। और आज हम फुलफिल विथ नंबर्स के साथ इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्टली नंबर्स के साथ नहीं रन अप करके कनेक्ट करवाऊंगी आपको जो आपने थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग की है। एक दो सेशंस में हम वो करेंगे एंड देन उसके बाद वी कैन गो विद दी, मतलब जो है हम डायरेक्टली नंबर्स पुट ऑन करें, ठीक है। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि देखिए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल करने की कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी कर लो कम ही लगेंगे, लेकिन एग्जाम में इस चीज़ की रेस नहीं होती कि आप कितने न्यूमेरिकल करके बैठे हो। आपने 5 से 6 या मैक्सिमम 10 न्यूमेरिकल करने हैं, अच्छी क्वालिटी में करने हैं, मतलब उसे अंडरस्टैंड करना है। अच्छी क्वालिटी का मतलब है आपने उसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर टाइम परमिट है तो आप कोई रेफरेंस बुक ले करके जो है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको जो है आपके सब्जेक्ट मटेरियल की बुक है उसमें जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है वो कर सकते हो। उसके अलावा भी आपका मन है तो वो आपकी चॉइस होगी, बट स्टिल हमें कुछ न्यूमेरिकल करना है, लेकिन अच्छे तरीके से समझ के करना है, उस पे मेन आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड विद द टुडेज क्वेश्चन। तेजा लिमिटेड which invited the application for 10,000 share. That means Teja Limited is a company. Now I'm a company, I'm a Teja Limited. I invited an application. Okay, everyone listen to me. I invited for how many shares? 10,000 shares. Getting? Of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share. So I invited you being a shareholder, and now if you solve the question, you will be the company. So I'll discuss this understanding with one or two numerical and then we'll jump, don't worry. But I want you to join with me while I'm discussing you, because even you know everything, even you understood everything. With this discussion things will even settled in your brain. Okay, please do cooperate and watch this. Okay, so I invited you for the 10,000 share for rupees 100 each at 10 rupees premium. Okay, so the amount is payable as follows. On application rupees 225. 1 second please. On application we have rupees 25. On allotment we have 35, which is including a premium. That means premium is it allotment. On first call we have 25 and final call we have 25. The applications were received for 9,000 shares. That means I invited you with 10,000 shares, but I receive an application with 9,000 share. Can you catch? It's a under subscription. Okay, so it's a under subscription of shares, so we can write here with the under subscription. And these were accepted in full because obviously I invited for 10,000, I got for 9, so I'll accept full. All money due were received except the first and final call money on 200 shares. That means the arrear on first and final call for 200 shares which were forfeited. Out of these shares, 100 were subsequently reissued. Not all were reissued, only the partial were reissued at rupees 90 per share. You are required to pass the journal entries for recording the above transactions including cash. तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या दिया है कि भाई हम आपको 10,000 शेयर के लिए इनवाइट किया, हमने जो पब्लिकली ओपन किया 10,000 शेयर किया, लेकिन आप में से सिर्फ 9,000 लोग मेरे पास आए, तो भाई सबको मिल जाएगा अब तो, क्योंकि मेरे पास मेरे जेब में 10,000 है बट आए 9,000 लोग हैं, तो मैं सबको दे दूंगी, ठीक है। कितने पे? 10 रुपए। आपके 100 रुपए के शेयर्स हैं और प्रीमियम है उस पर 10 रुपए। 25 रुपए एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे 35 रुपए है, इंक्लूडिंग 10 रुपए आपका प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 25 है, फाइनल कॉल 25 है, ठीक है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 9,000 शेयर्स की मिली है मुझे, ठीक है। सारी मनी रिसीव हो गई, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 200 शेयर में अरेयर हो गई, ठीक है। इसमें से केवल 100 शेयर्स जो हैं वो रीइश्यू हुए 90 रुपए के हिसाब से, और आपको पास करनी है जर्नल एंट्री। तो अंडरस्टैंड करके करेंगे ताकि आगे चल के जो है आपके लिए सॉल्यूशंस कमांड हो जाए। सो वी कैन कॉल्ड इट एज अंडर सब्सक्रिप्शन।
How you can find that it is an under subscription? It's because I issued for 10,000 shares, but I received an application for rupees 9,000 share, and that's on this basis I found it that it is an under subscription. So first I open up, I came to you and you will apply. So for me, because it's a book in the books of company, so in the books of Teja Limited journal, okay, so we'll pass the journal entry. We have no dates, so I'll just mark it as a serial number because we don't have any date. Okay, oh no, not like that, sorry. Okay. Then we have a particulars. We have amount. Okay, debit and credit, and just for laser folio. Okay, so this will be a general format. So I'm the company Teja Limited. When you solve the question, you will be the Teja Limited, you will be the company. So what, I issued the 10,000 share and I don't know who will be the shareholder. So you will apply, only then I'll come to know once I allot you all the shares. That means what you will do, you will apply to me. For me, what I'll pass in my books of account, bank account debit to share application. If you agree, bank account debit to share application account, being application money received on how many shares? 9,000 shares. Why 9,000 shares? It's because I invited you with 10,000, but I received for 9,000, na? Okay, so that's why I received on 9,000 shares. What is the value? On application we have 25 rupees, na? So 9,000 shares for 25 rupees, I received 2,25,000. I hope you people satisfy, and I don't want any of you to memorize anything. I want you to understand by heart, everything from your heart. You should understand each and every thing. Okay, so we have a application received on 9,000 share at application rupees to 25 to 2,25,000 respectively. Okay, गिव मी अ मोमेंट. अब आप एक कंपनी की तरह है, मैं जब सॉल्व कराऊंगी तो मैं कंपनी, आप सॉल्व करेंगे तो आप कंपनी होंगे. तो मैंने आपको शेयर इशू किए 10,000 रुपये, 10,000 शेयर्स लिए. अब आपको नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन मेरे शेयर होल्डर होने वाला है. तो जब आप अप्लाई करोगे तब मुझे पता पड़ेगा. अप्लाई किया तो मेरी बुक्स में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, किस अगेंस्ट पैसे आए, आपने अप्लाई किया इसलिए आए टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ये क्लियर है? कितने लोगों ने अप्लाई किया था? मैंने 10,000 शेयर दिए थे, लेकिन 9,000 लोगों ने ही केवल अप्लाई किया है. तो 9,000 इंटू आपकी एप्लीकेशन की जो वैल्यू थी वो कितना है? 25 रुपए दिख रहा है आपको, सॉरी ये 25 रुपए दिख रहा है. तो 9,000 इंटू 25 रुपए से मुझे मिल गए 2,25,000 रुपए. सेटिस्फाई हो रहा है? सो 9,000 into rupees. I'm just writing here for the purpose of your convenience. You can write here in your narration also. Okay. So now the entries bank account to share application is very clear. Now I decided, I received this amount. I allotted you the 9,000 shares, and now you 9,000 people will be my shareholder. This amount will be my capital. So we'll pass the true entry now. Share application account debit to share capital account. Because in examination, even a single point of error come into it, this story will help you to recall the things, and this will negligible your chance, negligible, even a no chance of wrong. Okay, being application money on 9,000 shares at the rate of rupees 25 each,
transfer to share capital account. Hope you satisfied. Okay. With the same amount 2,25,000, we need to transfer this amount to the share capital account 2,25,000. I hope you people understood this first entry and second entry. I don't want you to memorize. In case of any doubt of understanding, please do ask. Okay, then now I know you are my shareholder, and now after some time I need a money. I means a company. On behalf of company, the director will ask you to pay the call. Okay, the first call will be the share allotment. Hope you know. So on the first call, I need something I need to fulfill, and I know you are my shareholder. So first, then I will pass the due entry. I will pass the due entry, and I know that when I'm asking you the money to pay, it's include a premium. It include a premium. So I'll pass the due entry first because I know now you are my shareholder. Okay. So let's pass the due entry, share allotment. Don't worry, I will discuss in other language also in a brief moment after this entry. Okay. To share capital to securities premium. Okay, account. So I have some space issue. Okay. So being allotment money due on 9,000 shares. Why 9,000? It's because I received an application on 9,000. So everything now goes with the 9,000. So 9,000 share at the rate of rupees 35 each with rupees 10 each as premium. Clear? So you can write anything. There is a no fixed language for narration. So you can write anything which suits you. Okay. So we receive 9,000 into 35. 9,000 into 35. So it will be 3,15,000 as an application money. Okay. And from 9,000 into 25, that is your 2,25,000. 2,25,000. Your share capital and your security premium will be 90,000. Clear? So this will be your due entry on share allotment. So kindly give me a quick moment to conclude in other language. तो हमने पहले शेयर एप्लीकेशन मंगा लिया. अब मेरे को पता चल चुका है कि मैंने 9,000 लोगों को शेयर इशू किए, तो हम फिर ड्यू की एंट्री पास करेंगे. जो शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट है उसे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो हमने सेकेंड एंट्री पास कर ली. ठीक है. थर्ड एंट्री क्या है? अब मुझे पता चल चुका है कि आप मेरे शेयर होल्डर्स हैं. ठीक है. अब हमारे जो शेयर की वैल्यू है 35 रुपए है शेयर एप्लीकेशन पे, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है. मेरे पास कितने लोग आए? 9,000 लोग. तो अब 9,000 से ही एंट्री पास होगी, क्योंकि अब मेरे पास आए कितने हैं उन्हीं की एंट्री होगी ना. वही लोग ड्यू होंगे और वही लोग आगे पेमेंट्स करेंगे. ठीक है. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. इसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा. ड्यू एंट्री आपको बिल्कुल क्लियर होगी. प्लीज बार बार रिक्वेस्ट करिए, कोई भी चीज याद नहीं करिएगा. ठीक है. सो 3,15,000, 2,25,000, ये 2,25,000 है. ठीक है. थोड़ा स्पेस इशू है. और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 90,000 है. होप इट सेटिस्फाई. ओके. Next we will, now once I called you for the share allotment, now I am ready to receive the allotment money. So bank account debit to share allotment, bank account debit to share allotment. Some of you might ask, why not we are passing a security premium? So do you come and give me and knock my door every time all 9,000 share company? Okay, this 10 rupees for premium and this 25 is for allotment. No, you don't do that. You accumulate those amount and deposit into the bank account. So that's why we are not passing separately the security premium disclosure in our bank while receiving, because while receiving we receive the money in total, right? And this is a basic understanding. So being allotment money received on
9,000 shares at the rate of rupees 35. Hope you people satisfy. We have 3,15,000 as in total amount we receive. 3,15,000. Satisfy? Okay, so now we are done with the your allotment money. Now it's a time to due the first call and then we will hold the discussion on there. It's because we have summary. तो आपने अब क्या किया, हमने बैंक से जो allotment money ड्यू की थी वो allotment money रिसीव कर दी. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment 9,000 शेयर्स पे 35 रुपए के हिसाब से. कई बार स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, कई बार स्टूडेंट ने ये पूछा कि मैम हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्यों नहीं पूछते, या आपसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है. उस इंटरव्यू की तैयारी तक आपको जाना है कि आपसे पूछे भाई आपने क्यों नहीं सेपरेटली सिक्योरिटी प्रीमियम. भाई जब आप किसी के खाते में पैसे डालोगे तो उसे फोन करके बताओगे भाई साहब 10 रुपए आपको प्रीमियम के दिए और 25 रुपए अलॉटमेंट के लिए दिए हैं और सारे 9,000 शेयर होल्डर्स यही काम करेंगे. नहीं, आप ऑल टुगेदर सारे अमाउंट को एक्यूमुलेट करके बैंक में डाल दोगे ना, सारे टुगेदर डालोगे तो इसलिए एंट्री भी सारी टुगेदर होगी. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. Now I need a second allotment, second lot, and I need a money. I means a company. So I'll do my first call. So share first call. Okay. Share first call account debit to share capital account. So we have share first call of rupees 25. Final call is of 25. So for the due entry, I will pass complete due entry. I will change some either spaces. It's because now otherwise it will hampering the things. I will reduce some space here. I will reduce some space here because for the credit side now I'm lacking some space to write. Okay. So kindly do not do like this. Okay. Do not close there. I'm closing just because of some space issue. Hope you understand. Okay. Okay. Now this will I'll continue. Okay. So share first call to share capital being first call due on 9,000 shares at rupees 25 each. So now on the first call has been done and 9,000 shares at the rupees of 25. So 9,000 into 25. 9,000 into 25. We have 2,25,000. 2,25,000. So due entry, we have nothing in detail to discuss about the due entry because we can due the same as it is the given information. But while receiving, there is a error. So let's move ahead with the working. I'll just write the journal entry, bank account debit, because I'll get to know how much space is needed for like a calculation or working note for the journal entries, like for calculation of areas, because I want you to show the examiner your complete calculation. Okay. Bank account debit to share first call, and then we being first call money received. I'm just writing a shortcut narration. You can write anything. Okay. So I have to leave one space for final call and then again one more entry for the final call. Then your forfeiture and Reissue. Okay. Let's do the note here. Okay.
So how many shares we have seen that there is a arrear? So the application were received on 9,000 shares and they were accepted in full. All money due were received except first and final call money on 200 shares. So there is a arrear or 200 shares. So total shares were 9,000, an arrear of 200 shares. So net received we have 8,800 shares. 8,800 shares with rupees 2 lakh 25, sorry, at the rate of rupees 25. So now you can find 2 lakh 20,000 share first call. That means you will receive 2 lakh 20,000 on the share first call. 2 lakh 20,000. काइंडली गिव मी अ मोमेंट टू कंक्लूड इन अदर लैंग्वेज. आपके शेयर फर्स्ट कॉल में 200 शेयर जिनके पास थे उन्होंने ना आपकी फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करी, तो 9,000 में से 200 लोगों ने आपकी पेमेंट नहीं करी, यानी 8,800 शेयर्स पे आपको पेमेंट मिल गई है 25 रुपये, जो आपकी फर्स्ट कॉल की अमाउंट थी. यानी आपको जो नेट आपके बैंक खाते में आ रहा है वो 2,20,000 आ रहा है. आई होप आपको ये क्लैरिफिकेशन हो रहा हो, बिल्कुल क्लियर है. ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है. तो आपको वो जो पैसे आ रहे हैं वो आपके 2,20,000 रुपए हो गए. अरियर कितना हो गया एक बार हम अपने जो है सेफ साइड में कैलकुलेट कर लेंगे. यानी 200 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से आपका अरियर हो गया. 200 शेयर पे 25 के हिसाब से यानी 5,000 आपका अरियर है. क्लियर? ये आपने जस्ट अपनी नोट के लिए रखना है. ठीक है, नेक्स्ट फाइनल कॉल. तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रेज द फाइनल कॉल. सो I know who are the shareholder. I'll call for all the amount because I want all the amount, and I'm expecting that those who did the earlier in first call might pay when I call for the second call. So that's why I ask everyone to come and pay me. So again I'll raise the share final call account debit to share capital account being final call due on 9,000 shares at rupees 25 each. Hope you people satisfy with the same 2,25,000, because I expect, being a company member, I expect that those who might failed in the first call might come this time and come and pay me. So that's why I make a due entry of full amount. I will raise in my books full amount. Okay, but I received less. Bank account debit to share final call account being final ओके. सो काइंडली गिव मी अ मोमेंट टू कंक्लूड इन अदर लैंग्वेज. शेयर फाइनल कॉल की ड्यू एंट्री होगी. पूरे अमाउंट को हम ड्यू करेंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में तो हम पूरा ड्यू करके दिखाएंगे. कई बार ऐसे भी होता है कि आपने पहले फर्स्ट कॉल नहीं पेमेंट की, फिर बाद में पेमेंट हो जाती है, इसलिए हम ड्यू तो कंप्लीटली अमाउंट को करेंगे. 9,000 शेयर्स पे आपके 25 रुपए के हिसाब से हमने फाइनल कॉल की ड्यू, यानी आप मुझे 9 फाइनल कॉल की जरूरत है, मैंने आपको बोला भाई आओ शेयर होल्डर और आप 25 रुपए भी पे कर दो. ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या होता है कि वो फाइनल कॉल में भी जो शेयर होल्डर्स हैं वो पे नहीं करने आते हैं. ठीक है, तो मैंने ड्यू कितनी की थी? टोटल शेयर वॉज 9,000. Arrear was again the same 200. Sometime it may increase or reduce, it can be anything. We have 8,800 shares. So amount received will be 8,800 shares into 25. We have 2,20,000 amount we received in the final call, and the arrear we have again we have with the 200 shares into 25
5,000 rupees will be the arrear. So 2,20,000 we receive in the final call. Hope you people satisfied. ठीक है. सो काइंडली गिव मी अ क्विक मोमेंट टू कंक्लूड इन अदर लैंग्वेज. शेयर फाइनल कॉल में भी यही हुआ कि 200 लोगों ने अरियर कर दिया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया. ये बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, डिपेंड आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है. तो भाई जिन्होंने पेमेंट किया उनके पैसे आएंगे, यानी 9,000 शेयर्स थे, उसमें से 200 ने पेमेंट नहीं करी, यानी 8,800 लोगों ने पेमेंट शेयर्स के प्रति पेमेंट हुई है. वैल्यू थी 25 रुपए के हिसाब से 2,20,000 रुपए आपको पेमेंट फाइनल कॉल की मिल गई है. ठीक है, यानी अरियर कितने अमाउंट हो गया? अरियर का अमाउंट हो गया आपका 5,000 रुपए का. ये हमने अपनी फ्यूचर कैलकुलेशंस के लिए रखा है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल आपकी क्या हो जाती है? 2,20,000 रुपए. ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा और सारी चीजें क्लियर होंगी. ठीक है, नाउ अब अरियर हो गया और अब जो कुछ पैसे हैं वो फॉरफीट होंगे. तो आई बिलीव आपको याद हो फॉरफीट क्या होता है? जो आपने ऑलरेडी दे रखा है वही तो फॉरफीट होता है ना. सो आई बिलीव that you people are well aware and you can recall from the theory and detailed discussion we already did in our past sessions that what is going to be forfeited? Whatever is already received by me as a company. That means amount I already received against those arrear share. That means against these 200 shares, I already received the application money, premium and allotment. These three things have already been received. And if you recall, I already received the premium. Getting? And now these amount I am going to be forfeit. So we are going to forfeit for all 200 shares, but we are going to reissue only 100 shares. So I am going to forfeit what? Because these amount are already transferred to the share capital account, and now out of those 9,000 shares, 200 shares will be eliminated. So that will reduce our share capital. Na? That will reduce our share capital. Share? Because these amount are already due entry already passed to the share capital. Na? Hope you can see everywhere in the share capital due entry is with the full shares. But it will now I am decided to forfeit. So now it will reduce share capital account debit. It will now reduce with the arrear share. Your arrear share with the 200 shares. To share first call, this is will be the with the arrear amount. To share final call, instead of calls and arrear account, I am transferring to the individual ledgers. To share, or I will write forfeited share. To forfeited shares account. Okay. Being forfeiture of 200 shares for non-payment of first and final call money. Clear? You can write anything, there is no fixed rule, so don't try to memorize this. Okay? So we have a 200 shares. On the first call, it will be, we already calculated the arrear amount 5,000 and 5,000 in both the case. So it is luckily the same here, 5,000, 5,000, and we have share forfeiture. So on the application money, you have 200 shares into 25, that is 5,000, and on allotment 200 into 25, 5,000, total 10,000. We are not going to show the security premium. I hope you recall that it's been already been received. So 10,000. 10,000 we are going to forfeit in case of share forfeiture ledger, and total will be your 20,000. 200 shares, face value of 100 each. Recall? I hope you people recall this. 200 shares, face value of 100 each. Okay.
सो काइंडली क्विक गिव मी अ क्विक मोमेंट टू कॉन्क्लूड इन अदर लैंग्वेज। अब आपने शेयर फॉरफीचर करना है। अब फॉरफीचर करना है तो हमने शेयर कैपिटल में हर वक्त जब ड्यू एंट्री की तो 9,000 शेयर से ट्रांसफर कर लिया, अगर आपको याद हो तो आपने 9,000 तो ड्यू एंट्री हर जगह पे बराबर कर ली। लेकिन अब फॉरफीट कर रहे हैं, 200 जो शेयर्स हैं उनको कम करना है, तो ऑब्वियसली हमारी कैपिटल कम होगी ना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद नहीं करेंगे, खुद समझिए भाई, ड्यू एंट्री तो पूरी पूरी की थी, हमें तो पहले पता नहीं था कि भाई 200 शेयर्स के प्रति पेमेंट नहीं आएगी, लेकिन अब जब पता हो गया, हमने डिसाइड कर दिया कि हमें इसे फॉरफीट करना है, तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये आपको फील होना चाहिए, याद नहीं करना है, ठीक है। तो अब आपने शेयर कैपिटल को कम करना है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट हो रहा है आपका। क्यों? हम कॉल्स एंड अरियर की जगह पे हमने इंडिविजुअली फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दिखाया। 5,000 रुपए जो अरियर अमाउंट हुई थी, हमने कैलकुलेट की थी ना, ये अरियर अमाउंट, ये आपके अरियर अमाउंट्स ट्रांसफर होंगे, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। अब फॉरफीट कितनी हो रही है? जो ऑलरेडी पे किए वही तो फॉरफीट करेगा ना कंपनी। तो एप्लीकेशन पे 25 रुपए के हिसाब से 5,000, अलॉटमेंट में 25 रुपए से 5,000, टोटल 10,000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी अलॉटमेंट में रिसीव हो चुकी है। क्लियर? सो ये हमारी हो जाती है एंट्री शेयर फॉरफीचर की। अब केवल 100 शेयर ही रीइश्यू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। Out of these 200 shares, only 90 shares are 100 shares are reissued. Okay, so when the reissue means we are issuing to somebody else and we are going to receive money again, so entry will be 10 number. Bank account debit. We are again going to receive the money on those shares, on 100 shares, and that will be the part of our share capital. Hope you satisfy. Why? Because I reduces those share capital with 200 share at the time of arrear, at the time of forfeiture, and now I decided to reissue. Then again I need to transfer to the share capital account with those 100 share only, because the forfeiture was for 200 share, but I'm going to reissue only the 100 shares. Okay, so 100 shares of face value of 100 each. So it will be 10,000 being, you can write anything, reissue of 100 shares at rupees 90 each as fully paid up. So we have issued at discount, if you can see, it's not at par, it as 90 rupees and our face value was 100. So we will transfer the discount value to the share forfeiture account. Okay, that will be 100 shares into 9,000 and 1,000. Hope you people satisfy. Kindly give me a moment to conclude it. Okay, अब हम रीइश्यू कर रहे हैं, लेकिन ना 200 शेयर नहीं कर रहे हैं, केवल 100 शेयर कर रहे हैं, और प्लस फेस वैल्यू पे भी नहीं कर रहे हैं। जो हमारी 100 रुपए थी जिस पे हमने इशू किया था, केवल 90 रुपए पे कर रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो 10 रुपए तो हमारा फॉरफीचर में चला जाएगा क्योंकि वो डिस्काउंट है, और वो भी कंपनी अब फॉरफीट कर लेगी, वो 10 रुपए भी कंपनी अब ले लेगी। ठीक है, तो आपका शेयर कैपिटल पे 100 शेयर जो आपने रीइश्यू किए और आपके 100 रुपए के हिसाब से चला जाएगा। ठीक है, जेब में कितना आया? 90 रुपए ही आया। जेब में 90 रुपए ही आए हैं, बैंक में 90 रुपए ही जाएंगे, तो 90 इंटू 100 शेयर 9,000 रुपए, और शेयर फॉरफीचर में चला जाएगा 1,000। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए सारी चीजें। ठीक है, सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड अबाउट दिस रीइश्यू एंट्री, व्हाई वी डिड बैंक अकाउंट डेबिट, व्हाई वी डिड शेयर फॉरफीचर, एंड व्हाई वी डिड टू द शेयर कैपिटल। ठीक है, everything needs to be understood so that I don't want you people to be in the error in the examination hall. Okay, now it's a time, what is the amount we need to transfer to the capital reserve? So let's calculate the amount transferred to the capital reserve. Amount transfer to capital reserve. So amount forfeited per share, how much amount we have forfeited on each share. So we forfeited 10,000 na, here in this case we forfeited 10,000
and there was 200 shares we forfeited, 200 shares. So amount will be, one second please, it will be at rupees 50, we can check. Okay, 50. So but we have a loss per share of rupees 10 each, if you can see, because it was issued at discount which is at 90 rupees, not at complete 100. Okay, that means company has already forfeited 50. Company forfeited already in 50 and keep it in its pocket, but reissue it some amount which is at a loss of 10. Still company has a surplus of rupees 40, you can check it. So what is the amount on 100 shares of rupees 40? 4,000 rupees that should be transferred. Okay, 4,000 to be transferred to forfeited share, yes, share forfeiture account, debit to capital reserve account, being profit on reissue, transfer to capital reserve account. What is the amount of 4,000? Okay, I'll just, for your additional information, we will add back to share capital, because we'll show the capital reserve with 4,000 and we will add back to the share capital in your balance sheet with 50 rupees on 100 share which is not forfeited, rupees 5,000. Okay, so kindly give me a quick moment to conclude in other language. अब कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट हुआ, यानी शेयर फॉरफीचर करने की वजह से फॉरफीट जो किया था उसके बाद रीइशू करने पे कंपनी को फायदा है या नुकसान, हमें वो कैलकुलेट करना है. फायदा नुकसान जो है वो कैपिटल रिजर्व में आपका जो है फायदा ट्रांसफर होता है. अब कंपनी ने जब फायदा हुआ है या नुकसान ये चेक करेंगे. कंपनी ने 10,000 रुपये जो थे वो फॉरफीट किए थे, लेकिन 200 शेयर थे, यानी कॉस्ट पर शेयर कितनी आ गई थी, 50 रुपये. ठीक है, और जब अभी इशू किए 90 रुपए से किए तो नुकसान कितना भुगता, री इशू किए 10 रुपए के नुकसान से, लेकिन वो जो फॉरफीट कर लिए थे जेब में तो कितने चले गए, 50 रुपए के हिसाब से चले गए. इस बार नुकसान कितना भुगता, 10 रुपए के हिसाब से, यानी नेट गेन तो कंपनी को 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से हो गया है ना. तो 100 शेयर ही री इशू हुए थे केवल, तो 100 शेयर ही री इशू हुए थे और बेनिफिट 100 शेयर पे 40 रुपए, यानी 4,000 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा. मैं आपको स्पेसिफिकली ऐसे क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आप ये देख सकते हैं हर बार ऐसा नहीं होता कि जितने शेयर फॉरफीट होते हैं उतने ही रीइश्यू हो. तो ये कैलकुलेशन क्या है, पर शेयर निकालने से आपको इजी होगा कि आप ये अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे कि भाई कितना गेन या कितना नुकसान जो निकाल रहे वो आपके जो एरर के चांसेस है वो निलिजिबल होते चले जाएंगे. ठीक है, सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में हम इस फॉरफीचर अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, अगर आप अपनी जर्नल एंट्री को भी देखें, ठीक है, तो भी आप ये तो 10,000 आपके जो है 200 शेयर के थे, तो आपके 100 शेयर के कितने हो गए, 5,000 डायरेक्टली क्रेडिट में है. ठीक, डेबिट में 1,000 हो गया, तो अभी डेबिट में 4,000 की एंट्री टू कैपिटल रिजर्व. ये तो देखिए एक याद करने का एक ट्रिकी तरीका है, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो. ठीक है, देखिए आपने 9th नंबर एंट्री में क्या पास किया था, शेयर फॉरफीटेड शेयर्स विद दी 10,000 रुपीज, एंड ऑन द 10th एंट्री व्हाट यू पास्ड इज द शेयर फॉरफीचर विद दी 1,000 एज अ डिस्काउंट. So this 10,000 is for the 200 shares. So for 100 share it will be 5,000 and 1,000 is on the discount. So 4,000 directly you left with the share forfeiture on the debit to capital. But this is for the cross check. It's not a clear understanding. The understanding is that you need to calculate on the value per share, calculate whether there is a profit or loss on the reissue of these shares. Okay, so I hope I able to understand, I will help you to understand and give you a value addition to your knowledge, whatever you have learned in your childhood,
that means in a 11th 12th or in a junior class level. I believe most of the student, I found it that they try to learn it, they are not clear with the transactions, and I hope today I give you even a point one value additions to your life and to your learning phase. If it's so, give your valuable comments because it will be helpful for me to continue these sessions like this. ओके सो हमें उम्मीद है कि आज के सेशन से 0.1% कुछ तो आपका वैल्यू एडिशन हुआ होगा बचपन तक, यानी आपके जो कॉमर्स फील्ड का बचपन होता है उसमें आपने कैसे एंट्रीज को समझा है, उससे अगर कुछ भी आपको वैल्यू एडिशन लग रहा हो, कोई भी चीज़ आपको जो है बेनिफिशियल लग रही हो, अपने इनपुट्स दिया करें ताकि हम और जो है अपना बेस्ट आपको दे सकें और आप उससे बेस्ट सीख सकें। ठीक है, सो ऐसे ही अपना हार्डवर्क करते रहें और पैसों का मामला है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, सो इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करें। विल कीप लर्निंग ऑन more on commerce and accountancy. Please do take care. Till then, bye bye and Jai Hind.